So in yesterday's class, we had seen two questions, right? We Yes, had two ma'am. questions. One was related to levels of prevention, and the other one was related to Determinants of health. determinants of health, right? So two questions. I hope you all would have prepared your notes or outline related to these things. Now, in the same question paper, there is there is a question. 1 minute. Write short notes on the following, and it is food fortification, supplementary nutrition, and role of family in health. Okay, role of family in health and disease. So we'll go one by one. We'll first see food fortification. In food fortification, what are the things to be seen? In for food fortification, the first point that you would have to mention is food fortification of food is a public health measure. Okay, you have to mention it as the public health measure aimed at reinforcing the usual dietary intake of nutrients with additional supplies to prevent or control some nutritional disorder. So what has to be understood? You have to specify that what is fortification of food. First key point is it's a public health measure. Okay? So first point, it is public health measure, and it is aimed at reinforcing the usual dietary intake. कुछ नया नहीं कर रहे हैं. What are we doing is they are taking the usual dietary intake, और usual dietary intake के साथ में along with those intake they are taking additional supplies. ठीक है, additional supplies to prevent control some nutritional disorders. So, Yani, one example before we go into elaborate explanation of this, one example that you can think of is fortification of our common salt with, with, complete the sentence. Fortification of common salt with आयोडीन ना, बचपन से सुनते हैं ना, आयोडीन युक्त, है ना, आयोडीन युक्त नमक करके कहते हैं. तो व्हाट इज बीइंग डन, सॉल्ट कंजम्पशन इज नीडेड. ठीक है, along with that salt consumption, what is being done? Along with the salt consumption, iodine also is added to it. ठीक है, so this is about your fortification of food, the introduction part that you have to mention. Then besides that, like, I hope you have written the key point. The key point here is it's a public health measure. Second thing is you are reinforcing them to have their usual dietary intake. Third thing is whatever supplies extra that you want, that is being added to the usual dietary intake. And why is it being done? It is being done to prevent nutritional disorders. Okay? And another thing is you can say that it is for improving the quality of diet of a group. Then different programs of demonstrated effectiveness of fortification of food or water. For example, एक है fluoridation of water. Do you all remember that example? Dental caries हो रही थी. There were dental caries
So for dental caries, what was being done? Food fortification. How? That is fluoridation of water, because we are including that also in food, right? So fluoridation of water, then iodization of salt. What is the reason for adding iodine to salt? गॉइटर सुना है आपने? गॉइटर करके जो डिजीज होती है, यू वांट टू प्रिवेंट गॉइटर. हाँ, गॉइटर प्रिवेंट करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है. एंड certain food substances like vanaspati, milk, all this is being fortified with vitamin A and D. And we know that A, D and all are fat soluble ones. ठीक है? So fat soluble ones हैं, तो vanaspati, milk and all becomes the right substance for fortifying it with A and D. Now, besides fortification with one substance, nowadays even twin fortification is being done. अब आप पूछोगे twin fortification क्या है? Twin fortification में besides one substance, even another substance like iodine अगर add हो रहा है, besides iodine, even iron will be added. ठीक है? तो 3 ये हो गया एक पॉइंट, आप उसमें ऐड कर सकते हो. Now the next thing, there are certain criterias. तो आप इंट्रोडक्शन में ये सब लिख लोगे. फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? ये एक पब्लिक हेल्थ मेजर है जिसमें usual dietary intake, along with usual dietary intake, what is being told? Along with usual dietary intake, the intake of added supplements. ठीक है? Intake of added supplements, and that too by to prevent, control nutritional disorders. Fine. So this has to be remembered. Then in this, another thing that you need to know is fluoridation of water. Fluoridation of water is another example that you will mention. Iodization or iodine being added to salt, that is one example. A and D vitamins being added to vanaspati, ठीक है? That is one example. Now, in order to qualify as suitable for fortification, both the substance that is used, that means the nutrient that is to be added, ठीक है? The nutrient that is to be added, and the next thing that is there is the vehicle. What is the vehicle here? जिसके अंदर उस nutrient को add किया जाता है, ठीक है? The nutrient that is added and the vehicle, both are to be fulfilling certain criteria. You may note down some of the criteria that are there. Some criteria that is included is the consistently as part of regular diet, daily diet, okay, by relevant sections of the population or total population. इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप जिस व्हीकल में, यानी आप जिस सब्सटेंस में न्यूट्रिएंट को ऐड करने जा रहे हो, वो सब्सटेंस डेली बेसिस पे कंज्यूम होने वाला सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है? सो दैट इज वन थिंग. देन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एडेड मस्ट प्रोवाइड एन इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर लो कंज्यूमर्स ऑफ द व्हीकल
without contributing a hazardous access to high consumers. यानी आप किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, उसमें उसकी मात्रा उतनी होनी चाहिए, उसका अमाउंट उतना होना चाहिए कि इफ देयर इज समवन हु इज अ हाई कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मिल्क और एनीथिंग, इफ इट इज बीन फोर्टिफाइड, वो उसके लो कंज्यूमर और उसके हाई कंज्यूमर दोनों को, स्पेशली खास करके हाई कंज्यूमर को, उस न्यूट्रिएंट के लेवल के वजह से कोई भी हेल्थ हजार्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, दैट व्हीकल जो यूज कर रहे हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट ऐड करने वाले हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि रेगुलर डाइट का पार्ट हो। दूसरा कि वॉट एवर इज बीइंग एडेड, that is the nutrient that is being added to the vehicle, it should be sufficient enough in such a way that it is not access for high consumer. Let us take the third point now. The third point, what has to be remembered, addition of the nutrient should not cause it to undergo any change in the टेस्ट, स्मेल, अपीयरेंस। ठीक है, यानी आपने आयोडीन अगर सॉल्ट में ऐड कर लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा सॉल्ट का कलर चेंज हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया। ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऐड सच सब्सटेंसेस ओनली एंड इन सच अ वे ओनली दैट द ओरिजिनल taste, smell, appearance of the product should not go away. And fourth point to remember is cost of fortification must not raise the price of the food. ओके, यानी आपने उसमें जो चीज़ें ऐड कर दी हैं उसकी वजह से क्या नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स बीइंग एडेड the cost should not increase. Okay, so these points are over. So again we'll repeat what are the points to be remembered. Pehla, that whatever is being consumed, it should be on a regular basis. ठीक है, फिर सेकंड था कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एडेड वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को ज़्यादा खाता है तो उसमें वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा चले जाए। ठीक है, और थर्ड था कि न्यूट्रिएंट के ऐड करने से व्हीकल का टेस्ट, स्मेल, अपीयरेंस ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। और चौथा क्या था कि कॉस्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन बहुत भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि जो आपके जो कॉमन पब्लिक है वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट टू रिमेंबर इज दैट surveillance and control is very much required. Surveillance and control, like fortification is being done, at the same time lot of checking has to be done for the standards, whether the standards is being maintained. Okay, so this is about one question that was asked in your community, that is food fortification. So lot of points are there which you are able to elaborate on. पहले इंट्रोडक्शन बता दिया, फिर कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, उसके बाद में क्राइटेरिया बता दिया, और फिर लास्ट में यू कैन कंक्लूड योर आंसर प्रॉपरली बाय सेइंग दैट एडिक्वेट सिस्टम ऑफ सर्वेलेंस एंड कंट्रोल, एडिक्वेट सिस्टम ऑफ सर्वेलेंस एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। है ना, कोई भी चीज़ खास करके फूड प्रोडक्ट्स में अगर कंटिन्यूसली नहीं किया जाता है मॉनिटरिंग, तो क्या होगा,
उसका जो वैल्यू है, खास करके उसकी जो क्वालिटी है, दैट कैन गेट affected. Okay, so this is about food fortification. Then another question that is asked in your question paper, as I had mentioned to you, supplementary nutrition. Supplementary nutrition में क्या आता है? Supplementary nutrition में you will be mentioning about community nutrition programs. Okay, we have learned about various community nutrition programs. You may note only the headings and the points if you want. Community supplementary nutrition में ये सारे points आप add कर सकते हो कि main focus of supplementary nutrition is to overcome deficiency disorders in India. Okay, we know that most of our population, especially children under 5, are malnourished. अब ऐसे में गवर्नमेंट काफ़ी प्रोग्राम्स चलाते हैं. So as I mentioned to you, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया. Then you can draw a table. Before starting to write the answer, you can draw a table so that what they can do, they can nicely, the examiner will see that the table is drawn clearly, the student knows the points, so that will create lot of effect. ठीक है, तो आप टेबल बना सकते हो. टेबल में क्या है? सीरियल नंबर, प्रोग्राम एंड विच मिनिस्ट्री इज लुकिंग आफ्टर दैट प्रोग्राम. ठीक है, तो फर्स्ट वन यू कैन पुट डाउन विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस, vitamin A prophylaxis, and Ministry of Health and Family Welfare, that can be put down. Second is prophylaxis against nutritional anemia. ठीक है, prophylaxis against nutritional anemia. Again, these all are mainly by Ministry of Health and Family Welfare. If anything specific, I will mention to you. ठीक है, so first is vitamin A prophylaxis, second is prophylaxis against nutritional anemia, third is iodine deficiency disorders. Iodine deficiency disorders के बाद में fourth is special nutrition program. Fourth is special nutrition program. Fifth is बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम. ठीक है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम. सिक्स्थ ICDS. ICDS is one this thing. Seventh is midday meal program. Eighth is midday meal scheme. Okay, so we know that with this Poshan and all these new programs that have come up, minor changes are there, but at least these important points you can elaborate. Let's start with the first one. The first one is vitamin A prophylaxis. ठीक है, vitamin A prophylaxis program. What has to be remembered, that one of the components of National Program for Control of Blindness is to administer single massive dose of oily preparation of vitamin A. So you can note down students, ये किसके तहत आता है? Vitamin A prophylaxis program आता है National Program for Control of Blindness के अंदर. ठीक है, National Program for Control of Blindness के अंदर second point you can put down कि what has been administered, vitamin A containing 2 lakh international units. ठीक है, 2 lakhs international units is orally administered to preschool children. ठीक है, and what is the frequency? Every 6 months. Every 6 months through पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स. अब आप सोच रहे पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स में जो आशा ANMs खास करके,
they all are helping in this. जो आपके आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, they are helping in all this administering. Now because of COVID restrictions, we don't have children coming to the area, to one area, but still they are having records of these children. So as per the frequency, it is being administered. Okay. Then this program, when it was launched in 1970. That is one point you can add in that. And what has been found following the research that was done after this program was launched, there was a what should I say, a significant reduction, okay, a significant reduction in vitamin A deficiency found in children. So this is what points that you can add in vitamin A prophylaxis. पहला कि ये नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के तहत स्टार्ट किया गया. चाहे तो लिख सकते हो कि फैमिली और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने 1970 में ये शुरू किया. नेक्स्ट आप उसमें लिख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, ऑफ विटामिन ए इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू प्री स्कूल चिल्ड्रन और फ्रीक्वेंसी 6 months. तो ये पॉइंट्स को आप याद रख सकते हो. सेकेंड इज प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया. सो वी आर गोइंग वन बाय वन. प्रोफिलैक्सिस, तो ये हो गया विटामिन ए डेफिशिएंसी को लेके. दूसरा जो हमारे इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज न्यूट्रिशनल एनीमिया. सो कीपिंग इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, a national program for prevention of nutritional anemia was launched by the government. ठीक है. अब इसमें क्या किया जाता है, आयरन एंड फॉलिक एसिड इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेग्नेंट women. ठीक है. So this has to be remembered. Iron and folic acid is being distributed to pregnant women and young children. Then mother and child health centers are there in urban areas, primary health centers in rural areas, and ICDS projects. ICDS integrated child development स्कीम. ठीक है. तो ICDS का जो है प्रोग्राम, उसको आप मेंशन कर सकते हो. तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बारे में, देन ICDS प्रोजेक्ट्स के बारे में, दिस ऑल कैन बी mentioned. Then the technology for the control of anemia through iron fortification of common salt has also been developed. तो स्टूडेंट्स, इसमें 2 स्ट्रैटेजीज आ गई हैं. प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया. इन दिस, बिसाइड्स राइटिंग दैट हु स्टार्टेड इट एंड विद व्हाट फोकस, द 2 key points that have to be mentioned which would show that you know the answer is, one is distribution of iron and folic acid tablets. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स आप याद रख सकते हो. और दूसरा पॉइंट जो याद रख सकते हो कि iron fortification of salt. Okay, that has to be remembered. Iron fortification of the common salt has to be remembered. Then let us see the third one. Third, हेलो, हाँ जी मैम. हाँ मैम. हाँ, मैं आ जाऊँ. ओके. I just want to know. I think three or four.
अच्छा मैम, अभी ना मुझे जस्ट ये कहना था कि अभी पैनिक में आप ओके सो we were discussing about the salt fortification that is done. Then third is control of iodine deficiency, control of iodine deficiency disorders. In this, what has to be remembered? The National Goiter Control Program. It was launched by Government of India in 1962. ठीक है, खास करके this iodine deficiency disorder से related जो program, why it was launched? It was launched because especially in the goiter belt of the Himalayan region, many people were found to be suffering from goiter. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, it was very endemic in that area and that's why they had decided that this will be kept as one of the programs. ठीक है, अब next what we need to know is, instead of using the common salt, the people were emphasized that they have to use iodized salt. ठीक है, people were emphasized about usage of iodized salt. Then next, let us see what was done. It was found that with this program being launched, there was lot of reduction in the number of goiter cases. तो कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में फर्स्ट चीज आपको ये याद रखना है, यू हैव टू मेंशन कि व्हाई इट वाज स्टार्टेड. द national goiter control program was launched by government in 1962 in the conventional goiter belt, right? Especially in the Himalayan regions. What was emphasized? वहाँ ज़्यादातर लोग जो सॉल्ट वैसे ही अवेलेबल था उसको कंज्यूम करते थे. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट सॉल्ट दे वर एनकरेज टू यूज फोर्टिफाइड सॉल्ट. वो हो गया. एंड third point that you have to mention in that is that as a result, many of this iodine deficiency disorders cases were reduced. ठीक है, तो ये हो गया. अब फोर्थ वन हम देखते हैं, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1970. ठीक है, special nutrition program was started in 1970 for the nutritional benefit of children below 6 years of age. Pregnant and nursing mothers as an operation in urban slums, tribal areas and backward rural areas. तो सारे especially these areas स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में हम देखें तो स्टार्ट हुआ 1970 में. दैट की पॉइंट यू कैन रिमेंबर. द ग्रुप दैट वाज फोकस्ड इज 6 years, below 6 years, then pregnant, nursing mothers, then where all it is operational in
ठीक है, and backward rural areas. The supplementary food supplies about 300 kilocalories and 10 to 12 grams of protein per child per day. तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, 300 किलो कैलोरीज है और नेक्स्ट है 10 to 12 grams of protein per child per day. And mothers जो है beneficiary mothers, they receive 500 kilocalories and 25 grams of protein. ठीक है, 500 kilocalories and 25 grams of protein. Children कितना, 300 kilocalories and 10 to 12 grams of protein. This program was actually originally started as a central program. ठीक है, इनिशियली सोचा था कि इसको सेंट्रल प्रोग्राम के तौर पे चलाएंगे, बट लेटर ऑन इट वाज नोन दैट it can be made as a state program as a part of minimum needs program. And main aim of the special nutrition program, what was the main aim of the special nutrition program, was to improve the nutritional status of the target groups. अभी टारगेट ग्रुप्स यहाँ पर क्या क्या हैं, यहाँ पर टारगेट ग्रुप्स में आपके जो अंडर 6 के जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है या नर्सिंग मदर्स जो कहते हैं, दिस ऑल विल बी पुट इनटू द टारगेट ग्रुप्स. ठीक है, दिस प्रोग्राम इज ग्रेजुअली बीइंग मर्ज्ड इनटू ICDS प्रोग्राम. कुछ प्रोग्राम्स अगर बंद भी हो गए हैं, यू कैन जस्ट मेंशन इट. इवन व्हेन यू मेंशन इट विल बी पुटिंग एन इम्प्रेशन कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम चलता था. ओके, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नेक्स्ट इज बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम दैट यू कैन मेंशन दैट इट वाज स्टार्टेड अगेन इन 1970 एंड इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, it was started for the benefit of the children in the age group 3 to 6 years in rural areas, and mainly the responsibility was Department of Social Welfare. Now what was the main thing understood, that we can have balwadis, there will be balwadis, and what will be done, यहाँ पर जब बच्चे आते हैं बालवाड़ी में तो वहाँ पर उन्हें प्री प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ में फूड सप्लीमेंटेशन भी दिया जाएगा. ठीक है, सो gradually then this also was phased out because universalization of the ICDS program. जैसे ICDS प्रोग्राम आ गया तो जो बालवाड़ी का सिस्टम है वो भी बंद हो गया था, बट इनिशियली बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होती थी. तो स्टूडेंट्स अभी तक कौन कौन से हो गया, पहला है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, दूसरा है प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, तीसरा है कंट्रोल ऑफ आयोडीन deficiency disorders, fourth is special nutrition program. ठीक है, fifth is Balwadi nutrition program. Now we come to the sixth one. Sixth one is ICDS program. As we have already discussed, what is ICDS program? ICDS program is integrated, what is it, integrated child development scheme. yes, Child development program. very good, integrated child development services. So this was started in 1975. ठीक है, अभी तक का वाला में एक डेट चेंज हुआ है, एक आपका 1970 में था विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस, देन न्यूट्रिशनल एनीमिया का भी तकरीबन उसी टाइम पे, और फिर आपका 1962 में कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स था, और 1970 में स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम था.
ओके। एंड बालवाड़ी न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है वो 1970 में था, 1970 में स्टार्ट किया गया। अब ICDS जो है उसके 5 साल बाद 1975 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज what was done is for the persons of national policy for children, there is a strong nutritional component in the program in the form of supplementary nutrition, vitamin A prophylaxis, and iron and folic acid distribution. So beneficiaries of this program, who are the beneficiaries of this program? The beneficiaries of this program are the preschool children, 6 years and below, फिर एडोलेसेंट गर्ल्स 11 to 18 years, ठीक है, 11 to 18 years के हैं. Then pregnant and lactating mothers, they are also beneficiaries of it. And state and union territories are encouraged to undertake additional ICDS projects on the central pattern to cover more beneficiaries. तो मेजर बेनिफिशरीज वही हैं जो आपके जो टारगेट ग्रुप्स हैं, the same are the beneficiaries here, ठीक है. Now workers at the village level who are helping, who are actually helping in the this thing, delivery of services, the various workers that are there. First one is the Anganwadi worker. So here you can note down if you want. Each Anganwadi worker is covering a population of about 400 to 800 mini Anganwadi centers. ठीक है, वो एक पॉइंट आप लिख सकते हो. अबाउट दैट इज अबाउट पॉपुलेशन इज 400 से 800 और मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स कितने 150 से लेकर 380 या 400 तक रहेंगे, ठीक है. तो यू कैन पुट इट दैट वे कि पॉपुलेशन इज अराउंड 400 to 800 and there are many आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो वहाँ पर 150 to 400 and a network of महिला मंडल has been built up in ICDS. तो ICDS के ही प्रोजेक्ट के अंदर महिला मंडल का भी जो संगठन हुआ है and the project areas to help the आंगनवाड़ी workers, ठीक है. They help the Anganwadi workers in providing health and nutritional services. The work of Anganwadis is supervised by Mukhya Sevikas, that you have to remember that it is being supervised by Mukhya Sevikas. Then field supervision is done by Child Development Project Officer. Okay. So that also you can add up that the field supervision is done by the Child Development Project Officer. तो ICDS थोड़ा सा important topic भी है. Among all the various supplementary nutrition programs when you are mentioning, ICDS is one also the significant one because ये latest वालों में से आता है, ठीक है. So इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो points. पहला है integrated child development services started 1975, ठीक है. और ये किसके तहत? नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन. फॉर दैट, along with that it was started. Then there was a strong nutrition component in this program in the form of supplementary nutrition, then vitamin A prophylaxis, iron and folic acid distribution. The beneficiaries, who are the beneficiaries? The beneficiaries are the target groups only. 6 years के below जो हैं, adolescent girls हैं 11 to 18 years, pregnant and lactating mothers, all these are the
बेनिफिशियरीज, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका कैसा चलता है वो आप मेंशन करोगे कि विलेज लेवल पे जो है खास करके it is the Anganwadi workers who are actually running this program. The Anganwadi workers are running this program. Then each Anganwadi unit, okay, each Anganwadi unit covers a population of about 400 to 800. 400 to 800, and there are mini Anganwadi centers about 150 to 400. That has to be remembered. A network of Mahila Mandal, that has to be mentioned. तो ये महिला मंडल का मकसद ये भी है कि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये उनको हेल्प करते हैं, ठीक है, खास करके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड करने में. बिकॉज आई टेल यू स्टूडेंट्स, व्हेन यू एक्चुअली गो टू दिस रूरल एरियाज यू विल सी द लाइक वेयर वी वर पोस्टेड. I still remember Anganwadi is there, Anganwadi worker is there, but a separate cook is not there. So what will have to be done? The Anganwadi worker will have to depend on the people who are there in the community. तो वहाँ पर महिला मंडल अगर ऑलरेडी है, that is going to help, ठीक है. And the work of all these people, it is being supervised by the मुख्य सेविकास, okay, it has been supervised by the mukhya sevikas. Then field supervision is done by the child development project officer. That is one thing you can put down. Then midday meal program, midday meal program है क्या आपको याद रखना है. Midday meal program is also known as school lunch program. This is the 7th one. Midday meal program is also known as school lunch program. The program has been in operation since 1961 throughout the country. Okay. Now, what is being done? Objective of the program is to attract more children for admission to schools. Main means problem that we are facing right now in the community is, okay, now the scenario is totally different. Students, I understand अभी कोरोना है, schools नहीं चल रहे, but जब schools चलते भी थे तो जो रूरल सेटअप में जो मेजर एक प्रॉब्लम हम देखते हैं वो है कि बच्चों का ड्रॉप आउट, स्कूल छोड़ने के जो सिचुएशंस ज़्यादा होते थे, ठीक है. तो उसमें क्या किया गया, उसके लिए ये मिड डे मील प्रोग्राम को लॉन्च किया गया. तो न्यूट्रिशन भी हैंडल हो जाएगा और जो न्यूट्रिशन के साथ साथ में जो ड्रॉप आउट्स हैं आप उसे भी हैंडल कर पाए, ठीक है. Now in formulating midday meals for school children, the following broad principles has to be remembered. You may note down the important point. Parents should not feel that if they are sending the student, their child to the school, उस बच्चे का सुबह से लेकर रात तक का पूरा खाना पीने का सारा इंतजाम हो जाएगा. That should not get into their mind. It is only supplementary food. Okay, so it is not a substitute. Please, you may note down the points that has to be remembered in the midday meal program is the meals should be supplement. Okay, meals should be supplement and not substitute. The meal should supply at least 1/3 of total energy requirement. Total energy requirement and half of the protein needs. Okay, so meals should supply at least 1/3 of total energy requirements and half of the protein needs. That has to be remembered. Then next thing to remember is cost of the meal should be reasonably low. ठीक है,
बच्चों को हम देना चाहते हैं कुछ न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस एज मिड डे मील प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं है हम बहुत ज़्यादा भी उसको, क्योंकि सी वी हैव टू रन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, so you cannot think of things which later on you will not be able to provide to the students. So third criteria याद रखना है कि cost of the meal has to be reasonably low. ठीक है, ये पॉइंट आपने फूड फोर्टिफिकेशन में भी सुना था, है ना। सॉल्ट का कॉस्ट अगर 200-300 रुपीज़ हो गया क्योंकि उसके ऊपर लिखा है आयोडाइज सॉल्ट, तो गवर्नमेंट कितना भी कंपलसरी करे, पीपल विल नॉट कंज्यूम दिस सॉल्ट, ओके। And the meal should be such that it can be prepared easily in schools. No complicated cooking process should be involved. ठीक है, अब इसमें क्या है, जब हम मील्स की बात कर रहे हैं तो किसी दिन उपमा बन गया, किसी दिन बच्चों के लिए खिचड़ी बनती है, दाल खिचड़ी बनती है, तो ये चीज़ों को बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड, नो, इट हैज़ टू बी वेरी simple. Okay, so now see, as you saw here कि आंगनवाड़ी या स्कूल में, but certain places में you will see that it has been prepared in a different place and then it has been brought to the school. Okay, so वो जो कहते हैं ना, जो real picture में you may, when you compare you shouldn't be shocked कि ऐसा तो नहीं है करके. So there are places जहाँ पर the cook is not available or the person is not available, then what is being done? It is being prepared in a different area and only the prepared cooked food is being transferred. Okay. Next is, as far as possible, the locally available foods should be used. This is also another point that has to be remembered, that whatever is locally available, those things have to be used. Okay. Then, and last is the menu. Menu, you can put a point that it shouldn't be कि खिचड़ी है तो पूरे महीने पता है कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे खिचड़ी ही बनेगा करके, क्योंकि चिल्ड्रन हैं, उनको मोनोटोनस खाना अच्छा नहीं लगेगा एंड देन दे विल स्टॉप ईटिंग इट, इट विल बी ओनली थ्रोन. So as per the taste, as per the this thing, we'll have to keep changing it. ठीक है. Now another thing how you can now impress the examiner is you can prepare a model menu also. Okay, मॉडल मिड डे स्कूल मील करके आप एक टेबल बना सकते हो. एक साइड में आप फूड स्टफ्स लिखोगे, सीरियल्स एंड मिलेट्स, पल्सेस, ओके, और दूसरे साइड में आप उसका क्वांटिटी लिखोगे. फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू अ टेबल. इफ यू वांट टू नोट डाउन, you can make a table and you can put first column as food stuff. Food stuff, उसमें cereals and millets, that is one thing. Then pulses is one thing. Then third is oils and fats, leafy vegetables and non-leafy vegetables. Okay, leafy vegetables and non-leafy vegetables. So cereals and millets. In cereals and millets, you can put down 75 gram per day per child. उतना होता है, हर बच्चे को 75 ग्राम जाना चाहिए सीरियल्स. पल्सेस एटलीस्ट 30 ग्राम्स होना चाहिए. ऑयल्स एंड फैट्स 8 ग्राम जाना चाहिए. लीफी वेजिटेबल्स 30. ठीक है, leafy vegetables also you can put it as 30 grams per day per child. Non-leafy vegetables 30. So this is how you can mention it
as this thing. मैम सीरियल्स और मिलेट्स दोनों 75 ग्राम पर डे. Cereals, आप you can put it as cereals only, ठीक है. Cereals and millets, cereals हो या millets हो, दोनों में से कोई एक चीज, वो 75. ओके मैम. Okay. Now next thing, ये जो है another information that you can add is there is a National Institute of Nutrition. You would have heard in Hyderabad there is a National Institute of Nutrition. So they have actually prepared certain मॉडल रेसिपीज, मॉडर्न नहीं मॉडल, ठीक है, मॉडल रेसिपीज उन्होंने बनाए हैं. और ये जो है जो डिफरेंट एरियाज में प्रोवाइड किया गया है. एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ के हिसाब से थोड़ा उसको मॉडिफाई किया गया है, बट ओवरऑल लाइक हाउ डिफरेंट रेसिपीज कैन बी प्रिपेयर्ड दैट हैज बीन मेंशन्ड देयर, ठीक है. फिर नेक्स्ट चीज क्या है, next point means towards the conclusion of it, what are the points that you can add is, when we talk about school feeding, it should not be considered as end, ठीक है. The important goal that we want to establish, that we are trying to establish is, ये स्कूल फीडिंग के इससे हम एक्चुअली उनके ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं. नाउ when you have gone to community, I hope you would have seen, or when you will go in fourth year also, please look out for these things. When we talk about midday meal programs, तो बच्चों को एक हैबिट्स सिखाया जाता है, लाइक they have to wash their hands, ठीक है, they have to wash their hands and they have to pray and then they have to sit for the food. They should not be snatching food from each other. They should not spill the food all around. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक तरह से उस बच्चे को एक प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स के बारे में ओरिएंट कर रहे हैं, ठीक है. दैट इज वन थिंग. देन इनकॉर्पोरेटिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन, दैट इज अनदर थिंग. अब जब बच्चा वहाँ पर है, उसको कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू ही इसको क्या कर सकते हैं, चीज़ें सिखा सकते हैं ना. I was just trying to recollect. We were in villages of Maharashtra. Actually, it was in a rural area. It is like it's a song. It's in a song way that खिचड़ी खाओ पटा पटा वजन वाढ़े, है ना. तो ऐसे उसको सॉन्ग के फॉर्म में, यानी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाओ आपका वजन बढ़ जाएगा, एक सॉन्ग टाइप में वो गाता भी है बच्चा, तो एक तरीके से उसको मोटिवेशन मिलता है. So that is coming to our last part of it, that you can actually make it a place where they will learn how the eating habits have to be followed. That will be one point. Then next thing that can be done is they can be given nutritional education. That is one point. Then improving school attendance and incorporating nutrition education हमने कह दिया. फिर encouraging use of local commodities, जो खाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो लोकली अवेलेबल और सीजनली अवेलेबल चीज़ें हों, उन चीज़ों को हम एम्फसाइज कर सकते हैं, ठीक है. और फिर स्कूल अटेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए एम्फसाइज कर सकते हैं. और यू वेरी वेल नो पीपल हु ईट गुड ब्रेकफास्ट आर कंपैरेटिवली गुड इन देयर एकेडमिक्स, ठीक है. मेरा भी खुद रिसर्च का टॉपिक ये था, और फाइनली रिसर्चेस में यही प्रूव होता है कि जो सुबह उठकर अच्छा नाश्ता करता है और बाकी टाइम पे भी नॉर्मली अच्छे से खाता है, खास करके ब्रेकफास्ट, for especially for students, and lots of water. When you are studying, you should drink lot of water. I have myself felt it. It keeps you refreshed and it improves your concentration, ठीक है. तो उसके बारे में उनको बताना, this can be told to them. तो एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड
the main important thing you don't have to forget that this is to handle the deficiency disease that we are facing in our कंट्री. ठीक है, तो उस तरीके से इसको आप मेंशन कर सकते हैं. तो मिड डे मील प्रोग्राम में और आपको एलैबोरेट कंटेंट्स मिलेंगे. यू कैन ऐड दोज कंटेंट्स like what are the care to be taken, like food should be kept away from moisture, whole wheat use करना है. ठीक है, whole wheat, broken wheat, that can be used. Instead of using polished rice, we are using parboiled rice. Fine. ऐसे काफ़ी पॉइंट्स हैं. स्प्राउटेड पल्सेस, ये सब के पीछे मकसद क्या है? क्योंकि आप एक टाइम का न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसमें एटलीस्ट जितना हो सके अच्छा न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड कर सकें. ठीक है. एंड लास्ट वी कम टू द पॉइंट, वेन एवर एनी प्रोग्राम इज मेंशन, प्लीज रिमेंबर monitoring and evaluation of nutrition programs has to be like, for example, here it is a nutrition program, so you are mentioning about monitoring and evaluation of the nutrition programs. ठीक है, तो इसमें what can be done, you can mention certain things like since health and nutrition of young child, it is, you cannot compromise on those things, so frequently it has to be monitored कि किस तरह का खाना दे रहे हैं. Students, I don't have to comment on this point that the type of food that is being provided at times, many times you would have heard in the newspapers also कि खाने में ये मिल गया, कुछ खाना खा के कुछ बच्चे बीमार पड़ गए. अब ये क्यों है कि जब इसके अगर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग हो रहा है, if it is being continuously monitored, then there wouldn't be a problem. ठीक है, then there wouldn't be a problem, and the standards of nutrition will be met. Fine. So this is one thing that you can add. So आपके headings आप देख लो क्या क्या आ गए. पहला आपका food fortification अलग question था students. This is a separate short notes that is being asked about supplementary feeding programs. ठीक है, अभी आप उसको टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स करके दिया हुआ है. तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स या कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, बोथ सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स, these all are the words that are used. Okay, these all are the words that are used for the various what was I mentioning to you? The headings that can be there. Okay, so we'll stop our class here.